I hope you all are doing well. So hi, I'm Garima. I'm an educator on Unacademy. I have experience of nearly 8 to 9 years, and I'm here on this platform to help you guys to turn your dream of going abroad into reality. In order to do that, we as a part of Unacademy team, we are constantly putting efforts in order to get our students closer to their dream destination. And now everything is being taught to you in association with Cambridge. Isn't it amazing? So you can become part of this lovely family at a minimum subscription cost of just $999, because now Unacademy has completely slashed its prices and it has come down to $999. And there are a lot of things which I would like to tell you and which are really important if I talk about speaking, है ना? And I also gave one session, I also took one session just a few hours ago. In that I told you how you can get better with your part 1 of speaking, है ना? So now I'm going to teach you that how you can get better with overall speaking. One thing which is super important and which you should definitely keep in your head is that you should not use very big and unfamiliar words. देखो क्या होता है यार, बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि हम बहुत बड़े वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. नेवर लाइक दिस. हमें क्या करना चाहिए, जिन वर्ड्स के साथ हम बहुत कंफर्टेबल हैं. सी इफ़ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग बिग वर्ड्स लाइक flabbergasted एक्सेट्रा, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, यूज देम. But if you're not comfortable, just don't try to copy somebody. Just don't think, अरे मेरा दोस्त तो करता है मैं भी करूँगा, अरे मेरे मैम करते हैं मैं भी करूँगा. No. Every person is different. Every person has his or her own way of expressing things. So never try to copy somebody. Never try to, speak like somebody else. Just be your own self. Have your own vocabulary list. Have a list of words which can always help you to add some good vocabulary and some good, connectors or maybe idioms to your speaking part. Okay. Next thing is never memorize your answers. That is something I told in my previous session as well. Dear students, please don't memorize your answers. Never ever do that. Why you should not be doing it? Because एग्जामिनर्स जो हैं महारथी लोग हैं यार. दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ so many years, and if you are going to memorize answers, I think that is of course not a great idea. Never fake it too much. Never try to learn answers and speak, because of course they are going to understand that and they would get to know that, right? Next, use a range of good vocabulary and good grammar structures. जैसे कि फ्लुएंसी होना चाहिए, बहुत अच्छा कोहेरेंस होना चाहिए, बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए आपके में. लेक्सिकल रिसोर्सेज में जैसे आप सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करो, कंपाउंड करो, कॉम्प्लेक्स करो, है ना, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं टू गेट बेटर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्लीज़ वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. इफ़ यू फील दैट योर प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट दैट परफेक्ट, मेक श्योर यू वर्क ऑन इट. जो आपको, जैसे कुछ बच्चे ज़ में गलतियाँ करते हैं, है ना, मेजरली, जैसे सपोज़ उनको कुछ भी बोलना है तो ज़ और ज में बहुत गलतियाँ होती हैं. आप प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए एंड फिगर आउट करिए, प्रैक्टिस करिए उनको, राइट. डोंट वरी अबाउट द एक्सेंट. देखो यार, अब बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं पंजाब के, हरियाणा के, है ना, उनका एक्सेंट में होता है लैंग्वेज. अब जैसे हरियाणा का है तो हरियाणवी थोड़ा सा टच रहता है, पंजाब से हैं तो पंजाबी टच रहता है. बट डोंट वरी, इट इज़ ओके. सी you belong to a country which is a diverse country. India is a diverse country. There are people from India, there are people from North India, South India, है ना, and each and every state has its own language, and people over there speak in a tone which is their own personal, so that we cannot change over a course of time. अब बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैम हमें ना नेटिव स्पीकर की तरह ऐसे बोलना है, या हम अगर उसको थोड़ा हल्के से बोलेंगे तो ऐसे साउंड करेगा. अरे डोंट वरी, it is okay. When you are going to move to a country like Canada, Australia, America, where there is going to be people who are going to be English speaking, automatically your accent is going to change. But since you are coming from a country like India, जहाँ पर सब लोग आपकी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड मोर और लेस इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ अ ईयर एटलीस्ट, है ना, टू चेंज योर एक्सेंट. So whatever you are speaking, however you are speaking, you should be comfortable, you should be confident. Don't think कि मुझे उसकी तरह बोलना है, मैं ऐसे बोलूँगी तो मैं ऐसा साउंड करूँगी. Nothing like it. Don't worry. Examiners know that they are sitting in India and they are taking test, है ना.
they are not going to just really, you know, mark you on your accent, rather they are going to mark you on English, your sentences, your vocabulary, your grammar. So they are going to mark you on that. So rather than working on something like accent, which is going to involve lot of time, why not to work on certain things which can be improved in few days or maybe months. जैसे for example, like I said, you know, ग्रामर का मतलब ग्रामर आपका ठीक हो सकता है, वोकैबुलरी ऐड हो सकती है. सो दैट इज़ मोर फिजिबल फॉर अस, राइट? सो जस्ट डोंट वरी टू मच अबाउट योर एक्सेंट, टू मच डोंट वरी अबाउट इट, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ. पॉज टू थिंक. अब देखो, अब जैसे ना सपोज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, मे बी डू यू लाइक टू हैव चॉकलेट्स? So you can just answer like this, maybe, yeah, that's an interesting question. I do love to have chocolates, although I don't have a very sweet tooth, but I'm fond of chocolates which are not too sweet. For example, I like Temptation. It's neither very sweet and not it is very, very dark as well. So I'm fond of chocolates like that. अब जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा कि हाउ डू यू सेव मनी, है ना, आर यू इनटू सेविंग मनी? तो आप कह सकते हो लेट मी थिंक अबाउट इट, बट येस, आई डू सेव मनी इन मल्टीपल वेज. आई सेव इट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. I believe that it is very important to save for rainy days, and also I have started saving money through recurring deposit, and in fact in order to multiply my money I have started investing in gold. That is a safe investment, so that is how I am doing that. ठीक है. अब सपोज उन्होंने आपसे पूछा हाउ डू यू फील इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय समथिंग यू वांट, और हाउ वुड यू फील? That's a difficult question, but let me try. I think if I'll not have enough money to buy something today, I would not feel very sad about it. Rather, I would start working harder in order to get that one day. So I think that I would be motivated rather than being disappointed. ठीक है, समझ आ रहा है? ये क्या है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू आंसर एंड ऑल्सो टू थिंक अ लिटिल, है ना. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल some people say that one should get married again if the first marriage wasn't successful. What do you think about it? अब मैं लास्ट वाला यूज़ कर रही हूँ, ध्यान से देखना. हाँ, well, in fact I also know some people who say that if first marriage wasn't successful, we should get married again. In fact, I also agree to them. I also second with them. I do believe that if first marriage wasn't successful, people should definitely go ahead and marry again, because life is too long. It is too long to spend all alone. So there is no harm in getting married again, only if the person who is getting married wants to do that. So I don't think so there is any harm in it. ठीक है, समझ आया? मतलब ये क्या है? ये कुछ ऐसे फिलर्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, विच आर रियली गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड टू स्पीक एंड ऑल्सो टू टेक अ पॉज, बट नॉट अ पॉज विच इज़ गोइंग टू हार्म यू, राइट? आप ऐसा ले सकते हैं. Next, this I also talked about in my previous session, that avoid using fillers. Yeah, well, no, not too many. एक आधा तो चलता है, चलो. Yeah, I think that is a great question, है ना? Well, I think that is an interesting question, but not too many. अब हर question पे बोल रहे हो, do you have a garden in your house? Yeah, that is an interesting question. ये ऐसा बात नहीं बनेगी ना. हर क्वेश्चन को हम इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, हम हर क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते. तो हमें फिलर्स कर लो, बट ठीक है, बीच में एक आधा, नॉट टू मैनी. ठीक है. ओके, एक्सटेंड योर आंसर. लाइक आई ऑलवेज से कि एग्जामिनर को मौका मत देना, बिल्कुल मौका मत देना कि वो तुमको वाई करे. अगर वो तुम्हें वाई करेगा तो वो खिंच जाएगा, और खिंच जाएगा तो भाई नंबर नहीं देगा. एक तो बेचारा पहले ही इतनी देर से बैठा है ना, और उसके बाद भी आप ये कर रहे हो, तो फिर वो इरिटेट हो जाएगा. तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ऐसा ना करो कि वो आपसे हर क्वेश्चन के बाद पूछे वाई. ठीक है, प्लीज़ डोंट डू इट दिस वे, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. नेक्स्ट वन, स्माइलिंग हेल्प्स. अब यार मेरे को कोई पूछेगा, है ना, आर यू अ हैप्पी पर्सन? सो आई कैन से इंडीड I definitely consider myself a very happy person. Rather, I would say a happy-go-lucky kind of a person.
I don't get carried away too much with little problems. I always try to be as calm, as composed as I can be. So I definitely consider myself a happy-go-lucky kind of a person. या फिर happy-go-lucky kind of a person पहले बोल दिया तो jovial person. ठीक है, समझ रहे हो इन चीज़ों को? क्लियर हो रहा है यार? डोंट स्पीक इन मोनोटोन. हम क्या zombies हैं? हम क्या रोबोट हैं? नहीं, हम क्या हैं? ह्यूमंस. हमारे अंदर ना बहुत इमोशंस हैं. हम खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, है ना, एंड देन एक्साइटेड भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं. तो हमारे अंदर ये सारे इमोशंस हैं. तो वेन एवर यू आर स्पीकिंग योर इमोशंस शुड बी एक्सप्रेस्ड. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जैसे हमें किसी को लव दिखाना होता है तो हमारा एक अलग सा एक्सप्रेशन होता है. हमें किसी को गुस्सा दिखाना होता है तो अलग सा होता है. अब अगर हमें किसी को प्यार से कुछ समझाना है तो अलग सा होता है. तो तभी जब आप बोल रहे हो तो देयर शुड बी लिटिल मॉड्यूलेशन इन योर स्पीकिंग. ठीक है, जैसे अब आपने कोई बहुत इम्फसाइज करना है तो थोड़ा सा तेज़ बोल दो. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू सेव मनी? Indeed, I am definitely into savings. I believe it is very important to save money for rainy days. Since if in case in the future we get into any sort of trouble, we can always use that money for the betterment. So that is why I feel saving money today is very important. समझ आया मैंने कैसे बोला? ये क्या होती है? टोन मॉड्यूलेशन. ऊपर नीचे आपकी जानी चाहिए सो दैट एग्जामिनर गेट्स इंटरेस्टेड. जो कॉमन स्पीकिंग टॉपिक्स हैं उनको बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस. अब जैसे जस्ट अ सेकेंड, देखिए क्या होता है ना, अब कॉमन टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इवनिंग वॉक, या फिर इवनिंग्स पे आ जाता है, मॉर्निंग्स पे आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में वेदर पे आ जाता है, या जो क्यू कार्ड्स हैं, वी ऑलरेडी हैव अ लिस्ट ऑफ क्यू कार्ड्स. आप इंटरनेट पे लिखोगे आपको मिल जाएंगे डिसेंट क्यू कार्ड्स, है ना. उनको प्रैक्टिस करो. जिनके पास नहीं है यू कैन ऑलवेज आस्क अस, है ना, ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म यू कैन आस्क अस. तो 70 to 80 टॉपिक्स आर देयर. प्रैक्टिस देम विद योर होल हार्ट एंड सोल, because automatically when you are going to go for the test you are going to get from them only. Don't worry about it. ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिस करो. अदर देन दैट अब मैं आपको ना थोड़ा बोल कर दिखाती हूँ. लेट मी स्पीक फ्यू टॉपिक, मतलब फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट यू नो दैट हाउ यू शुड बी आंसरिंग. हाँ, okay, so let's get started. उन्होंने मेरे से पूछना है what is your full name? So I can say that my full name is Garima Sapra. So they are going to ask me that where are you from? I can say that I hail from Chandigarh, which is a beautiful city and the capital of two states, Punjab and Haryana. And this amazing city is known for its lush green beauty and planning, since it has been planned by a French architect, Le Corbusier. ठीक है, समझ आया ये सबको? Then maybe they can say that let's talk about maybe neighbors. Do you like your neighbors? I do like my neighbors. They are good people, and we are living, residing just at next door from them for nearly 20 years now. So they are very sweet, and basically I have neighbors who are quite generous, and they are always there in case we need any help. So I definitely believe that we are blessed with great neighbors. Next, are neighbors usually close to each other in your country? Yes, I definitely think that. In my country, generally people live in a very close-knit society, and especially neighbors are always very helping and jovial, and they are also quite connected to each other.
And in fact, in my country, it is believed that before any relative reach, or maybe they come, reach, neighbors reach before them. So generally people are very much connected to their neighbors, and they are always there through their thick and thin. Next question can be that, do you think your neighborhood is a good place for children? Neighborhood क्या होता है? पड़ोस, आसपास. So I can say that I definitely do believe that my neighborhood is a beautiful place for children as well, since it is full of greenery, and there are so many parks where children can go and play. In fact, in my vicinity there is a school as well. It's a play school, and I would say that it is truly a blessing, because generally people today are working, so they can always send their children to that play school. Other than that, also there is a dispensary and a medical store, and then hospital as well for kids in case of any emergency. So I think that my neighborhood is a lovely place for children to live. Next question can be that, do you think it is important to have good relationship with your neighbors? I believe it is important, and it is important to be cordial with everybody we are living, because I'm a person who doesn't really keep a lot of grudges, and I feel that life is too short to waste on all these fights and grudges and all. So I think that we all should be cordial to each other, and definitely neighbors should be cordial, because before anyone else would reach to us in case of any emergency, our neighbors would come and stand beside us. So I think we should definitely be very much connected, and we should have good relationship with our neighbors. ठीक है, आपको समझ आ रहा है? मैंने अपने आंसर्स दिए 3 to 4 लाइन्स, 2 to 3 लाइन्स में जवाब दिया. वाई का मौका नहीं दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही उसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया. सो दिस इज समथिंग व्हाट यू डेफिनेटली नीड टू कीप इन योर हेड, दैट whenever there are going to be questions over there, you have to be so open, and you should be very comfortable and nicely you should answer. मतलब कंजूसी नहीं करनी, हमने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी. वोकैबुलरी डालो, अच्छे से अपनी बात को रखो, एक्सप्रेस करो, so that you can definitely express your point of view basically. Because examiner, when you are going to go for speaking, only by being vocal and by being comfortable with the language, you will be able to explain the point to the examiner, and that is the main idea, right? So thank you so much. Is there anybody who would like to ask me anything regarding the same? Please do that. Let me see. The house is open. If you want to ask me anything regarding speaking, I am all here. Please tell me anything you would like to ask me. हाँ, ये सब याद हुआ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है. कॉमन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़. फिर एक टोन में नहीं बोलना है. हम ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं, हम ह्यूमंस हैं. हमारे अंदर सारे एक्सप्रेशंस हैं, सारे की सारी फीलिंग्स हैं. स्माइल की हमेशा नहीं हंसते रहना है, मतलब आंसर दिया थोड़ा स्माइल किया, ठीक है. एक्सटेंड योर आंसर्स, अपने आंसर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है. वाई का मौका मत देना एग्जामिनर को कि एग्जामिनर आपको वाई करता रहे. दैट्स रियली इरिटेटिंग. फिलर्स बहुत लंबे लंबे पॉजेस नहीं लेने हैं, बिकॉज दैट कैन अगेन कॉस्ट यू. पॉज टू थिंक, ये सारे बड़े अच्छे कुछ फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू व्हेन यू आर टेकिंग अ पॉज एट दैट टाइम स्पेसिफिकली. डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट, जस्ट डोंट वरी. डोंट थिंक अरे मेरे में पंजाबी एक्सेंट है, मेरे में हरियाणवी एक्सेंट है. कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. दिल खोल कर बोलो. ग्रामर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फॉलो करो. ये सारी चीज़ें, फ्लुएंसी, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ये सब बहुत ध्यान रखना है. याद नहीं करने, रट्टा नहीं मारने आंसर्स को, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना. प्लीज़ नेवर डू दैट. डोंट यूज़ बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड्स. बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि यार जो आपको कंफर्टेबल है बस वो, दैट इज़ इट, ठीक है. सो यू कैन मीट मी ऑलवेज ऑन Unacademy platform. I generally come live over there. Hit on the bell icon if you liked it, like and share and subscribe.
and thank you so much. This series of speaking is going to continue. I'm going to give you some more tips and tricks in order to score more, but today's, I think, the major highlight is these words जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, these phrases which can help you to start your answer, and also think 10 seconds खुद को भी मिल जाते हैं एकदम से comfortable होने के लिए, and then थोड़ा सा सोचने के लिए कि हम क्या जवाब दें. So these are good fillers, you can start, but बहुत ज़्यादा नहीं. ये नहीं कि हर क्वेश्चन oh that's an interesting question, well that is an interesting question, not too much. एक आधा कर सकते हैं, ठीक है. चलिए, so thank you and have a very very good night. See you all tomorrow. Please take good care of yourself. Anyone would like to ask me anything? I'm here for another 1 minute. Anybody? That's it. चलिए, so thank you so much. Have